Hello everyone, Rahul here. Please ping me if I'm audible. I'll start in another 2 minutes. Guys, meanwhile, anyone have any question on the today's, like before I started today's session, please ask me any question. आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो, Hive, MapReduce, analytical queries, rank, dense rank, anything. Yeah, Nishtha, go ahead. Yes, tell me. Sir, I scanned my computer. There is no virus, but still, I think memory is being taken up. Is it because of virtual machine? नहीं, अगर वर्चुअल मशीन उस समय चल रहा होगा तभी वो मेमोरी लेगा, नहीं तो वो नहीं लेता है अगर आप वर्चुअल मशीन शटडाउन पे रखोगे तो व्हाट इज द केस? वर्चुअल मशीन शटडाउन है या? यस सर, बिल्कुल शट डाउन है। एंड 108 GB की सी ड्राइव है, वो पूरी कंप्लीट। वो सिर्फ उसमें से सिर्फ 2 MB मेरे ख्याल से का वो है टेकन अप। ओके, 2 GB फ्री है। आई won't be able to comment on this unless मैं आपका मशीन चेक करूं. Okay, because it's mostly related to your machine only. Yeah, तो वर्चुअल मशीन लेकिन आपने शटडाउन करके रखी थी क्या? ऐसा कई बार ऐसा होता है, वर्चुअल मशीन क्लोज कर देते हैं, शटडाउन नहीं करते, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है. सर, हाउ टू चेक इफ इट्स शट डाउन? आप टास्क मैनेजर ओपन करो अपना लैपटॉप का. टास्क मैनेजर में देखो कि VMware या वर्चुअल मशीन आपको उसमें एंट्री दिख रही है. टास्क मैनेजर में दिख जाता है ना कौन सा प्रोसेस चल रहा है या नहीं. अदरवाइज आप VMware को ओपन करो और उसमें वर्चुअल मशीन में शटडाउन का ऑप्शन आ रहा होगा. सर, उसको टास्क उठा के मैनेजर में तो नहीं दिखा रहा। टास्क मैनेजर में नहीं दिखा रहा है? नो सर। नहीं, देन तो आई थिंक वो कुछ और प्रॉब्लम है. ठीक है, तो आई सी इफ आई गेट टाइम, बट मोस्ट प्रोबेबली वो आपके लैपटॉप का इशू है. ओके सर। Okay. Meanwhile, anyone have any question?
Guys, am I audible now? Taran, can you make me the presenter, please? Thank you. Thank you. Okay, guys. So meanwhile, this machine is starting. Let me start with one new topic today. So we will continue with Hive today, definitely. But parallelly, we will also start Scoop. Okay, Scoop, which is another important topic. So before we start that, let me give you some brief idea about it. Yeah, Gulzar. So Hive, we will keep doing for at least another 2 to 3 classes. But what I'm saying is we are going to start a new topic today, which is Scoop. Okay. So I'm giving you some brief about how Scoop and Hive are related. Okay. So Hive and Scoop, that's what we are going to understand today. So if you look at my screen, no, Nishta, no need to download anything. Everything is available in the virtual machine. So guys, if you see, I'm saying, say this is your Hive. Okay. If I'm saying this is your Hive machine, okay. So I am saying, let's consider that this is your Hive machine. Okay, this green box. And now whenever you run any SQL query in this box, that SQL query, what it do, it actually talks with HDFS. Okay, it talks with the HDFS and see for some directories, files, folders, all those things. And to read and write this data or interaction with HDFS happens with the help of MapReduce, right? This is your MapReduce. So far we know that yes, Hive can interact with HDFS, and all the processing in Hive is nothing but MapReduce. MapReduce की जगह फ्यूचर में Spark और तेज, ये दो एग्जीक्यूशन इंजन हैं जो कि MapReduce को रिप्लेस कर देंगे. हमने क्वेरी भी देखी थी कि एग्जीक्यूशन इंजन चेंज कैसे किया जाता है, राइट? But now there is another tool that you guys need to learn, and that tool is Scoop. Okay, so what is Scoop is very important. हमारी वर्चुअल मशीन में अपाचे के साथ, अपाचे हडूप के साथ स्कूप हमेशा फ्री में रहता है हमारे पास. अपाचे स्कूप इसको हम कहते हैं. इसकी फुल फॉर्म क्या है? SQL to Hadoop. ओके गुलजार, दैट इज तेज, TEZ, तेज. तो गाइज स्कूप की फुल फॉर्म होती है SQL to Hadoop. मींस अगर आपका कोई SQL डेटाबेस है तो वहां से आपको अपने हडूप के सिस्टम में, अगर हडूप के सिस्टम में कोई डेटा मूव करना है तो आप स्कूप के थ्रू करोगे. मतलब आपका अगर MySQL, Oracle, Teradata, कोई भी ऐसा डेटाबेस है, SQL डेटाबेस, RDBMS जिसको हम RDBMS कहते हैं, अगर RDBMS सिस्टम्स में से डेटा हडूप सिस्टम्स में लाना है तो स्कूप इज द बेस्ट सोल्यूशन. ठीक है. और स्कूप, इसको हम कहते हैं इंपोर्ट प्रोसेस. इंपोर्ट, you are importing the data. Okay, so whenever we have a relational database,
एंड हमें बोला गया है कि वहां से आपको हडूप में डेटा लाना है, तो हम स्कूप में एक इंपोर्ट कमांड होती है वो यूज करते हैं। सिमिलरली अगर कल को आपको हडूप से रिलेशनल डेटाबेस में डेटा लेके जाना है, वाइस वर्सा, राइट, तो भी हम ये काम कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं स्कूप एक्सपोर्ट, दैट इज द एक्सपोर्ट कमांड। ओके, एक्सपोर्ट। तो स्कूप में अभी के लिए इतना ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम स्कूप की बात करेंगे तो हम एक आरडीबीएमएस से डेटा हडूप में डालेंगे और हडूप से आरडीबीएमएस में। हम इंपोर्ट कमांड्स और एक्सपोर्ट कमांड्स, ये दो तरह की कमांड्स सीखेंगे। ओके, बट अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ आते हैं कि जब मैं डेटा हडूप में ला रहा हूं तो वो डेटा कहां पर लैंड होगा हडूप में। स्कूप के थ्रू जब भी आप डेटा लाओगे तो वो आपके एचडीएफएस में जाके स्टोर होगा। रिमेंबर, स्कूप व्हेनेवर ब्रिंग द डेटा फ्रॉम अ टेबल, वो एक एचडीएफएस में फोल्डर बना देता है और उसके अंदर डेटा की फाइल्स बना देता है। तो दैट मीन्स इफ दिस इज एचडीएफएस, whenever you do scoop, your data is always in the HDFS. Okay. So what I'm saying that if this is your HDFS, if this is HDFS, so data will always come here. So scoop हमेशा डेटा कहां लाएगी, यहां पे। ओके, but then the question is कि अगर स्कूप से डेटा यहां पर आएगा तो इस डेटा के ऊपर क्या मैं हाइव के टेबल्स बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो। आप हाइव के टेबल्स बना सकते हो जो कि उस डेटा को पॉइंट कर रहे हैं जो स्कूप के थ्रू आपके सिस्टम में इंपोर्ट किया गया है। तो पहले तो इस प्रोसेस को थोड़ा अपने माइंड में सेट कर लो कि किसी भी रिलेशनल डेटाबेस से जब हम हडूप में डेटा लाते हैं तो हम स्कूप की इंपोर्ट कमांड चलाते हैं और वो डेटा हमारा एचडीएफएस में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि वो एचडीएफएस में स्टोर्ड है तो उस पर आपको जावा का मैप रिड्यूस प्रोग्राम ही लिखना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीका ये है कि क्या मैं इस डेटा के ऊपर हाइव का टेबल बना सकता हूं? तो आप डेफिनेटली बना सकते हो, सो दैट कि आप एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू वो डेटा एक्सेस कर सको। ओके, बट कैन एनीवन टेल मी कि दिस टेबल विच आई एम क्रिएटिंग ऑन टॉप ऑफ दिस डेटा, should it be internal table or external table? स्कूप से मैं डेटा जो लाऊंगा एचडीएफएस में, उसके ऊपर जब मैं टेबल बनाऊंगा तो वो इंटरनल होनी चाहिए या एक्सटर्नल होनी चाहिए हाइव टेबल? थिंक अबाउट इट गाइस। सी, इंटरनल टेबल का फायदा कब है? जब डेटा मैं ओन करता हूं। अगर डेटा गलती से डिलीट भी हो गया तो मैं उसको रीजनरेट कर सकता हूं, तब इंटरनल। लेकिन एक्सटर्नल तब जब कोई एक्सटर्नल सिस्टम मुझे डेटा भेज रहा है और अगर वो डेटा डिलीट हो गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं क्योंकि उस डेटा को ऑन नहीं करता। राइट अदिति, करेक्ट। या निष्ठा, राइट। नितिका, ओके। सो इन दिस केस इफ यू थिंक अबाउट, ये आरडीबीएमएस डेटाबेस है कोई ऑरेकल, यहां से आपने स्कूप इंपोर्ट करके डेटा इधर लाए। अब इसके ऊपर आपने एक इंटरनल टेबल बना दिया और किसी ने गलती से वो टेबल अगर उड़ा दिया तो ये डेटा भी उड़ जाएगा। इसीलिए हम एक्सटर्नल टेबल बनाएंगे जिससे कि अगर कोई उसको डिलीट भी कर दे, मेरा डेटा डिलीट ना हो। ओके, हेलो, यस।
Okay guys, yeah. So you understood the concept now कि जब मैं इंटरनल एक्सटर्नल टेबल्स की बात करता हूँ, आखिर क्यों हम इन चीजों को सोचते हैं, कब हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं. तो स्कूप इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस एरिया. तो जब भी कोई एक्सटर्नल टीम आपको डेटा भेजती है, तो उसके ऊपर अगर आपको हाई का टेबल बनाना है अपने एनालिसिस के लिए, तो उसको एक्सटर्नल टेबल ही बनाओ, इंटरनल मत बनाओ. हाँ, बाद में इस टेबल के ऊपर आप कोई दूसरा टेबल बनाना चाहते हो, मान लो अपने एनालिसिस के लिए, ये वाला टेबल तो इसको पॉइंट करता है, ठीक है. लेकिन इस टेबल को यूज करके आप कोई और टेबल बनाना चाहते हो, मान लो, तो इस टेबल को आप इंटरनल कर सकते हो, क्योंकि इस टेबल का डेटा कहां से आ रहा है, इस टेबल में से आ रहा है. तो अगर ये टेबल कल को डिलीट भी हो गई, तो आपके पास ओरिजिनल डेटा है. ओके. तो जो फर्स्ट टेबल होती है आइडियली आपके सिस्टम में, सबसे पहले जहां डेटा लैंड होता है, उसको एक्सटर्नल ही रखा जाता है. लेकिन उसके बाद जो टेबल्स होती हैं, वो आप इंटरनल रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ये वाली जो टेबल है, इसमें आपको 10 कंट्रीज का डेटा आता है, लेकिन आपको सिर्फ एक कंट्री के डेटा पे एनालिसिस करना है. तो आप इस पे फिल्टर करके एक नया टेबल बना सकते हो, जिसमें सिर्फ इंडिया का डेटा है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपको इंडिया के डेटा पे एनालिसिस करना है. फिर आपने एक और इंटरनल टेबल बना लिया, मान लो यूएस के डेटा के ऊपर. ठीक है, आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया, तो आप इन दोनों टेबल को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि ये तो एक तरह से मेन टेबल नहीं है. इनका डेटा कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक है, जो कि एक्चुअली एक एक्सटर्नल सोर्स को पॉइंट कर रहा है. तो रिमेंबर दिस. एनी क्वेश्चन इन दिस, एनी डाउट? It's clear? What is the role of scoop? When to use internal, external? नहीं नहीं गुलजार, यहाँ बैकअप की तो बात ही नहीं हो रही है. आई डेंट गेट द क्वेश्चन. इंटरनल टेबल में कोई बैकअप होता ही नहीं. अगर टेबल उड़ गई तो गया डेटा आपका सारा. नो बैकअप. नहीं नहीं नितिका, ऐसा नहीं है. इंटरनल टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द पॉइंट इज, व्हेन यू नो दैट कि इस टेबल को अगर गलती से किसी ने ड्रॉप कर दिया, तो मेरा डेटा मैं कहीं ना कहीं से रिकवर कर सकता हूँ. तो इंटरनल टेबल is important. The question is, the data that it contains is still available in my Hadoop system. I don't need to go to some external team to ask for that data. कि भाई मुझसे वो डेटा गलती से डिलीट हो गया, दोबारा से स्कूप चला दो. अब दोबारा से स्कूप चलाना अपने आप में ही मान लो 1-1 घंटे की जॉब है. आप किसी सिस्टम से डेटा हडूप में ला रहे हो, मान लो वो 1 घंटे तक चलता जा रहा है. अब तुमने वो 1 घंटा तो लगाया, और बाद में तुमसे वो गलती से डेटा भी उड़ गया, तो तुम्हें फिर से स्कूप चलाना पड़ेगा. तो हम इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं. ओके. कि एक बार सिस्टम में अगर डेटा आ गया, तो उस डेटा के ऊपर एक्सटर्नल टेबल बना लो या तो, ठीक है, या फिर उस एक्सटर्नल टेबल के ऊपर और इंटरनल टेबल्स बना के उन पर एनालिसिस कर लो. ओके. तो पहली टेबल आपकी एक्सटर्नल होनी चाहिए, बिकॉज इट कंटेन्स द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. उसकी सब्सिक्वेंट टेबल्स में आप कुछ भी एनालिसिस कर सकते हो. एक तरह से मास्टर टेबल हो गई है. तो मास्टर डेटा कभी उड़ना नहीं चाहिए. ये वाले टेबल्स फिर भी उड़ा सकते हो आप. यस निष्ठा. ओके. So we will work on the scoop. So if you look at my screen right now, yeah. So whenever you have to run scoop, you'll type scoop and enter. So scoop, see, if it's
showing something like that, मतलब आपके सिस्टम में स्कूप है, बट स्कूप में अब आपको कमांड क्या चलानी है, आपको स्कूप से डेटा इंपोर्ट करना है। ओके, तो इंपोर्ट, स्कूप इंपोर्ट की हम कमांड चलाएंगे, लेकिन अभी कहाँ से इंपोर्ट करना है, कहाँ पे सेव करना है, वो सब इंफॉर्मेशन भी यहाँ डालनी पड़ेगी। तो स्कूप इंपोर्ट चल गया एज इन, वो कह रहा है रनिंग दी स्कूप, बट इट रिक्वायर्स सर्टेन पैरामीटर्स। मैंने वो पैरामीटर्स पास नहीं किए कि आखिर स्कूप इंपोर्ट में आपको करना क्या है, तो हम करेंगे स्कूप इंपोर्ट। फिर स्कूप एक्सपोर्ट की भी कमांड है हमारे पास, आई एंटर इट। So if you look here, scoop export requires a table, कि भाई आपको कहाँ एक्सपोर्ट करना है, किस टेबल में डेटा एक्सपोर्ट करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम पास करेंगे, बट अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि स्कूप की कमांड्स आप इस तरह से चलाते हो, स्कूप इंपोर्ट, स्कूप एक्सपोर्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर Hadoop system. How to do that, we will see that. Okay, so now you understood scoop, its role, import export commands, and what each one of them do. Now coming back to this thing, what I was telling you is about the internal external table. Then you also saw surveys yesterday, the ORC, Parkweight, different surveys. Now what is important is another thing, which is partitioning and bucketing. Okay, anyone know what is partitioning, bucketing? किसी ने पढ़ा है Hive में? Sir, the retrieval or recovery of the deleted data can be done from the internal or external table. Gulzar, from internal table you cannot recover the data. From external table you can do that. Okay. Internal मतलब that data is internal to it. टेबल गई तो डेटा भी गया। एक्सटर्नल मतलब दोनों में लूज कपलिंग है। एक्सटर्नल में मतलब टेबल गई तो डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। Okay, so now we will be talking about Hive partitioning and bucketing. So let's go inside Hive. Partitioning, bucketing plays a very important role along with scoop. जब हम scoop की बात करते हैं ना, तो it plays a very important role. आपको यहाँ क्लिक करना है नितिका, ये है ना, just click on this and it will be done. Meanwhile आप लोगों का वर्चुअल मशीन चल गया है जो कल गोमिनी ने शेयर किया था, गाइस? Anyone who is still like, okay, good Tanya, Pragisha, oh great. Guys, please ping me if you are able to run it. Nishta, you can try that. Okay, no problem. Rest people, please let me know. For those who it's not working, please let me know. Okay, Vipul, it's fine. So I think for all of you it's done except Nishta. Anyone else? Guys, please do it, because now I want you to practice in parallel with me. You can open this machine, open the terminal and just type in Hive. You will be inside Hive. Okay. So now what will we do today is we will. सर इसकी स्क्रीन मैक्सिमाइज कैसे करनी है? बहुत छोटी स्क्रीन आ रही है। ये ऊपर ये दिख रहा है, ये ऑप्शन है ना, ये वो जा ही नहीं रहा वहां पे। वो हैंग हो रहा होगा आपका मशीन।
कोई हैंग नहीं, आप नहीं हो छोटा रहा है सर, स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा। जितना है उतने पे कर लो। अच्छा, कंट्रोल ऑल्ट, करणदीप इज सेइंग कंट्रोल ऑल्ट, अच्छा ट्राई दैट। अच्छा, हाँ कंट्रोल ऑल्ट, हाँ सर हो गया। हो गया, परफेक्ट, थैंक्स करण। Okay, so now what we are going to see is how Hive's partitioning and bucketing plays a role in parallel with Scoop. गुलजार, क्लाउडेरा ओपन करने के लिए आपको वही वर्चुअल मशीन ही चाहिए ना, VMware, उसी से ही खुलेगा और उसके बाद उसके अंदर आप ये विंडो पे क्लिक कर दोगे, ये खुल जाएगा। सर कल गोमिनी ने 2 फाइल्स शेयर की थी। उसने VMware भी शायद प्लेयर भी शेयर किया होगा। एक वर्चुअल बॉक्स है और मतलब सेम ही है ना, एक वर्चुअल बॉक्स है। तो वर्चुअल बॉक्स उन लोगों के लिए है जिनके पास मैक है, वो वर्चुअल बॉक्स यूज कर सकते हैं। ओके, so let's come back to this thing, Hive partitioning, bucketing and how Scoop plays a role there. अभी तक हमने Hive की जब भी बात की, मैंने बोला अगर ये Hive का कोई टेबल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग HDFS में एक फोल्डर होगा, राइट? और उस फोल्डर में हमने कल देखा था फाइल थी 0000_0 करके, राइट? तो आपके पास वो फाइल्स बन रही थी। नाउ कंसिडर अ सिनेरियो दैट today I inserted some data here, I get one file. Tomorrow I inserted some more data here, I get one more file. So जब भी मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे फाइल्स बनती चली जा रही हैं। ओके, अब मैं इस टेबल में से डेटा रीड करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करना चाहता हूँ। द प्रॉब्लम इज इट विल रीड ऑल द फाइल्स, it will read all the files. If there is 100 files, my query will read 100 files, which is time consuming. So partitioning and bucketing helps in tuning our queries. How? Say for example, you say that I put some logic so that this data is divided in subfolders. Means if you have a table, employee table, I'll do certain logic so that within this employee table I have subfolders for each country. Say this is US, this is India, this is Germany, so that employees for each country are only present in their own subfolder. तो अगर ये मेन टेबल है उसके अंदर आपके पार्टीशंस बन जाते हैं, पार्टीशंस मतलब सब फोल्डर्स। ओके, सो when you create a table, you don't want to keep the entire data together, rather you want to create subfolders. अब इससे फायदा क्या होगा कि कल को आप सिर्फ यूएस के एम्प्लॉयज का डेटा देखना चाहते हो वेयर क्लॉज लगा के, तो वो सिर्फ यूएस वाला फोल्डर से डेटा रीड करेगा, बाकी फोल्डर्स में से डेटा रीड नहीं होगा। इससे आपकी क्वेरी मल्टीपल टाइम्स फास्टर हो जाएगी। अगर नॉर्मली मान लो 4 घंटा ले रही थी तो हो सकता है वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, बिकॉज आपने मेन टेबल के अंदर जो डेटा था उनको सब फोल्डर्स में सेग्रीगेट कर दिया। इसको हम पार्टीशनिंग कहते हैं। आपने पार्टीशनिंग कर दी डेटा की, जिससे क्या हुआ कि आपका जो भी फाइल्स यूएस की हैं वो एक जगह, इंडिया की एक जगह, जर्मनी की एक जगह, इस तरह से। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज पार्टीशनिंग। Similarly, there is another concept which is bucketing. We will talk about that in a while. Gulzar, 1 second. No, Gulzar, you are opening which file and from what? You are opening the file that Gomini shared with the help of the VMware player. Is that you are doing with the help of?
VMware player, you are opening the VM file, right? Not the VirtualBox file. You have to see, the point is, do you have that much space available on the C drive? Because you have to, जब आप पहली बार उसको ओपन करते हो VM player फाइल को, वो एक्सट्रैक्ट होती है आपके सिस्टम में, it takes too much of space. So at least 30 GB is what you need. Can you ping me the exact error? Like other than this, you are getting anything? File too large to open? ये स्पेस के इशू ही हैं आपके लैब पे। हाँ सर एक्चुअली एक जो 2 फाइल्स में से जो डिस्क 1 वाली थी वो तो नहीं खुल रही, पर उसके बिना जो वर्चुअल बॉक्स था वो खुल गया। नहीं, तो वर्चुअल बॉक्स नहीं ओपन करना है ना आपको, आपका वीएम प्लेयर है ना। हाँ, तो मतलब वो डिस्क तो नहीं खुलनी जो नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास अगर वीएम प्लेयर है तो आप वीएम वाली मशीन ही ओपन करो। अगर आपके पास वर्चुअल बॉक्स है तो आप वर्चुअल बॉक्स वाली मशीन ओपन करो। 2 मशीन्स दी थी गोमिनी ने। हाँ, तो मतलब वो दोनों ऑल्टरनेटिव हैं। ठीक है, दोनों ऑल्टरनेट है, उनमें से कोई एक ही यूज करना है आपको, दोनों नहीं यूज करना है। ठीक है सर, है ना, सिर्फ वीएम वेयर वाला यूज करो, वर्चुअल बॉक्स नहीं। ओके, तो वी सॉ दिस राइट, द पार्टीशनिंग थिंग। अब पार्टीशनिंग में स्कूप कैसे रोल प्ले करता है, लेट्स सी। मान लो मेरे पास एक मेन टेबल है, ठीक है। इस टेबल में मैं जब स्कूप से डेटा लाता हूं तो वो यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स बनाता चला जाता है। आज मैंने आज स्कूप चलाया, कुछ फाइल्स बन गई। कल दोबारा चलाया, कुछ और फाइल्स बन गई, राइट। निष्ठा, आप, इट डिपेंड्स, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। वीएमवेयर वाली भी कर सकते हो, वर्चुअल बॉक्स वाली भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट कोई एक यूज करनी है, दोनों नहीं। और प्रेफर्ड है वीएम प्लेयर। ओके, वीएमवेयर वाली प्रेफर्ड है, वर्चुअल बॉक्स वाली नहीं। लेकिन मैक वाले लोगों के लिए सिर्फ वर्चुअल बॉक्स वाली ही चलेगी। ओके, हाँ। अब मैं ये कह रहा हूँ, मान लो आज आपने स्कूप चलाया, आपकी 4 फाइल बन गई। कल स्कूप चलाया और 4 फाइल बन गई। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम हो रही है कि आप रोज स्कूप से डेटा तो ला रहे हो, लेकिन एक ही फोल्डर, पेरेंट फोल्डर के अंदर ही फाइल्स बनती चली जा रही हैं, विच इज नॉट गुड। तो इस केस को भी हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम टेबल को पार्टीशन कर देते हैं। मतलब हम बोलते हैं डेट वाइज पार्टीशन। इस केस में हम डेट वाइज पार्टीशन करते हैं। उससे क्या होता है, अगर स्कूप आज चला तो आज की डेट का एक फोल्डर बन जाएगा, सब फोल्डर, और आज की डेट की सारी फाइल्स उसके अंदर होंगी। कल दोबारा स्कूप चलेगा तो यहाँ पे एक नया सब फोल्डर आज की तारीख का बन जाएगा, ठीक है, और उस दिन का डेटा यहाँ होगा। इससे क्या फायदा होगा, आपको पता रहेगा कि किस दिन स्कूप से कौन सा डेटा मेरे सिस्टम में आया था, बिकॉज पार्टीशनिंग इज बाय डेट। अब कल को आप कहते हो कि यार 1 महीने से पुराना जितना भी डेटा है सारा डिलीट कर दो, तो आप सीधा सीधा जाके इन सब फोल्डर्स को उड़ा सकते हो, क्योंकि सब फोल्डर्स डेट वाइज है। तो ये वाला सिनेरियो अलग है, ये सिनेरियो अलग है, लेकिन दोनों पार्टीशनिंग की इंपॉर्टेंस हमें बता रहे हैं। गाइज, बिफोर वी गो इनटू हैंड्स ऑन, एनी डाउट? हम बकेटिंग की बात नहीं कर रहे अभी, हम सिर्फ पार्टीशनिंग की बात कर रहे हैं। और पार्टीशनिंग के 2 फायदे मैंने यहाँ आपको बताए। पहला, जब आपको डेटा इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि आपकी एसक्यूएल क्वेरीज फास्टर हो जाए। दूसरा, जब एक्सटर्नल सिस्टम से डेटा आ रहा है और आपको हर दिन का डेटा एक अलग फोल्डर में रखना है, जिससे कि आपको ये पता रहे कौन सा डेटा मेरे सिस्टम में कब आया था, और अगर मुझे एक ओल्डर डेटा को डिलीट या आर्काइव करना है तो मैं इजीली वो काम कर सकता हूँ विदाउट टचिंग द अदर फोल्डर्स और फाइल्स। Any question? Here the partitioning is on date, here the partitioning is on country.
Yes, Nishtha. Partitioning is like creating subfolders within the parent folder, which is the tables folder, right? So we will see this practically now. Guys, 1 minute. Okay. Meanwhile, आप लोग अपना सिस्टम में हाइव ओपन कर लो. Please be inside hive. Try to create a simple table. I am just opening and creating the partitioning table. एक बार आप लोग सिंपल टेबल बना के जस्ट टेल मी कि वो बन रहा है कि नहीं. बिकॉज कई बार क्या होता है कि हाइव का जूकीपर से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, तो आपका टेबल बन नहीं पाता. तो प्लीज गो इनसाइड हाइव, create one basic table and confirm me that you are able to create a table, basic table. Guys, please let me know if you are able to create a hive table. Yes or no. What you have to do, see, we already did this, right? Create table, let's say employee, and you have employee ID which is of the type integer, and then say the country, the employee country, which is say of the type you can say string, but I'm saying country code, which is say integer. I can use that. So normally you create a table like this, right? Okay, Tanya, thanks a lot. So you create a table like this.
Okay, now the problem with this is, अगर आपने एक सिंपल टेबल बनाया तो इसमें आपके सारे एम्प्लॉइज चाहे वो किसी भी कंट्री के हों वो एक ही फोल्डर में पड़े रहेंगे, which is not good when we have to do analytics. So what we have to do is we will say create table, okay, employee underscore कुछ भी नाम रख देते हैं, id which is integer, but now we will say partition by country which is of the type integer. So here what is the difference, guys? If you look at this query and if you look at this query, the difference is you are creating the table and you are using two columns, right? ID column and the country column, right? So you have ID column and the country column, but partitioning is to be done on the country column. तो country column को हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, okay? यहाँ नहीं दिखाएंगे, उसे हम यहाँ दिखाएंगे. तो हुआ क्या? We create table this having one column as this, but the second column is जिसपे वो partitioned है, that is country column. So this is what the syntax is. Let me ping you. Okay, so we will see the difference between the first one and the second one. So both the tables are created. So what we will do describe formatted employee. So this is the path where you have this employee folder, but इसके अंदर कोई सब folders नहीं बनेंगे. Okay, no subfolders. But when I'll say describe formatted employee underscore p, the partition table, again this is the path, but जब हम इसके अंदर जाएंगे we will be able to see the subfolders. अब ये चीज लेकिन हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा पहले टेबल्स में. तो लेट्स इंसर्ट द डेटा. Insert into employee values as employee ID 1 belonging to country code say 100, employee ID 2 belonging to say country code 100, employee ID 3 belonging to country 101, employee 4 belonging to country 102, like this, and I ran this query. Okay, it will run a map reduce job. तो what we are doing, एक normal table है, एक partition table है, दोनों में हम same data insert करेंगे, उसके बाद हम फर्क देखेंगे कि पीछे data दिखता कैसा है. Karan, what is the error you are getting if it's not creating? Is it something related to the connection, Zookeeper connection, or safe mode exceptions, connection exceptions? What is it? Okay. So guys, we are creating one simple table and one partition table. We are inserting the same data so that you will be able to see what is the difference. So guys, please create the two tables, try to insert the data.
ये मैपलिस जॉब जो चल रहा है इसको अब आप लोग भी जैसे कल मैंने बताया था इसको कैसे चेक करना है, प्लीज डू दैट. ओके, सो वी हैव रैन, मतलब हमने डेटा इंसर्ट कर दिया है एक टेबल में. नाउ आई एम इंसर्टिंग इनटू द सेकंड वन. आप लोग चेक कर सकते हो करण, अपना मैपलिस जॉब वगैरह चेक कर लो एक बार वो कैसे चल रहा है. इट्स सिंपल, यू हैव टू ओपन दिस, ये जो यहाँ पे ब्राउजर दिख रहा है, थ्रू द ब्राउजर it will open this browser. Here you have this drop down, right? Hadoop. Open this yarn resource manager. That's it. So Karan, please check if it's opening. Yarn resource manager. So if you look here, Karan, this is what it's showing me, the jobs, right? Which have been executed. ये हो गया ओपन करण? Are you able to? Yes, 8088 is the port. Yeah, that's the port number for resource manager. And if you want to see node manager, it's 8042. बट 8088 काफी है आप लोगों के लिए, उसके अलावा और भी बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं. So 8042 is the port for node manager.
right? We talked about resource manager, node manager, right? So this is the node manager, which tells you total memory that you have, the permanent memory, the virtual memory, a lot of things, the applications which are running, everything. Yes, Tanya. कुछ नहीं करना आपको तान्या, इस पे क्लिक करोगे आप, ब्राउजर विंडो होगा वहां पे, वो ब्राउजर के अंदर आप ये हडूप में यान मैनेजर दिख जाएगा। अगर कुछ भी नहीं करना, जस्ट open the browser and paste this. Open the browser and paste this. It will open. Okay. Please confirm, Tanya, if you are able to open this. Sir. One second. Okay. So one second. Yeah, ask me the question. Someone was asking. Yes, sir. Yeah. Sir, actually, I just now deleted जो आपने पुराना वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया था. I just now deleted that HDB. So it created a lot of space. Perfect. So, sir, that is not needed for these two to download. No. ये सब alternate है ना एक दूसरे के, और Okay. तो उसको आपने अगर हटा दिया तो that is perfectly fine. आप अभी VMware डाउनलोड कर लो. That's enough. मतलब वहाँ गोमिनी ने आपको 2 मशीन्स दिए होंगे, वर्चुअल बॉक्स एंड VMware, तो आप सिर्फ वर्चुअल बॉक्स को ही यूज करो. सॉरी, VMware को यूज करो. यस सर, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स बहुत टाइम ले रहा है डाउनलोड करने में. हाँ तो मत करो. तो एक डिस्क वन. ओके, वर्चुअल बॉक्स को इग्नोर कर दो. सिर्फ
सर OBF फाइल है, एक VMD के फाइल है, कौन सी वाली? VMD के सर दैट इज टेकिंग फॉरएवर टू डाउनलोड. अब I don't know about that. You can check with other classmates. They can help you. But yeah, because OVF I think is the virtual box. Okay, so if virtual box is available, you can use virtual box. That's not a problem. अगर आपका virtual box डाउनलोड हो गया है तो आप फिर इंटरनेट से Oracle का एक टूल आता है which is virtual box player. जैसे आपके पास VM player है वैसे ही आप वर्चुअल बॉक्स प्लेयर डाउनलोड कर लो इंटरनेट से और आपका वर्चुअल बॉक्स जो OVF मशीन है वो चल जाएगा. ठीक है, हर मशीन के रनर्स अलग अलग होते हैं, प्लेयर्स अलग अलग होते हैं, तो आप वर्चुअल बॉक्स प्लेयर डाउनलोड कर लो नेट से. Oracle कंपनी प्रोवाइड करती है वो. ओके, इट्स नॉट दैट कि आपको VM प्लेयर ही करना है. अगर वो टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में, इग्नोर इट. Okay guys, so now if you see what we did earlier was we inserted into this table these were the values, but when a table is partitioned we cannot directly insert data into it. We have to add this clause that insert into this table, which is a partition table partitioned on this column, and now these are the values. Okay, but when I ran this it failed because it's saying your table is not partitioned because I gave EMP. मुझे देना क्या था EMP underscore P, तो मैंने EMP underscore P दे दिया जो सही टेबल है. Now what happened is dynamic partition strict mode requires at least one static partition column to turn this of this. ये एक सेटिंग आपको करनी होती है. जस्ट कॉपी इट, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, इसको लिख के रख लो अभी के लिए. जस्ट कॉपी पेस्ट इट, set it up. Once that is done, I'm pinging you this. इसके लिए मुझे आपको स्टैटिक और डायनेमिक पार्टीशनिंग क्या होती है ये बतानी होगी. ये दो तरह की पार्टीशनिंग होती है, स्टैटिक पार्टीशनिंग एंड डायनेमिक पार्टीशनिंग. वी विल टॉक अबाउट दैट, बट अभी के लिए जस्ट फॉलो अलोंग. डू दिस सेटिंग चेंज एंड इंसर्ट. So you will see that your map reduce is running. तो आपको क्या करना है, बस डेटा इंसर्ट करना है. और हम यहाँ पे डायनेमिक पार्टीशनिंग यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें एक सेटिंग चेंज करनी है ये डायनेमिक पार्टीशनिंग की. मैंने आपको दोनों पिंग कर दिए हैं ग्रुप पे. ठीक है, सो जस्ट नोट इट डाउन. मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, अगर मैं नहीं करता हूं तो प्लीज आस्क मी. Static partitioning and dynamic partitioning. So guys, please do this and let me know if you are able to insert the data in the partition table. So guys, I am taking a 15 minutes break here. We will connect after 15 minutes. आपको क्या करना है, पार्टीशन टेबल बनाना है जो मैंने आपको पिंग किया हुआ है ग्रुप पे, उसमें डेटा इंसर्ट करना है. डेटा इंसर्ट करने से पहले बस वो एक सेटिंग चेंज करनी है जो मैंने पिंग की हुई है. दैट्स इट. यू हैव टू रन इट. जब डेटा चला जाए टेबल्स में तो उनको सिलेक्ट करके देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल करके देखो. Then I will explain you later. So guys, we will connect after 15 minutes. What is the error? Please ping me. Sir, actually, I have created two tables. First one is partition table. तो सर उसमें मैंने 4 कॉलम्स लिए हैं, ID, Yes. country और population and growth. Yes. So sir, partition में insert into table name partition. आपने
आपका पार्टीशन कॉलम हमेशा पहली बार लास्ट कॉलम होना चाहिए। अच्छा, इंसर्ट लास्ट में करना है। वो ऑर्डर में लास्ट का कॉलम होना चाहिए हमेशा। अगर वो बीच का कॉलम है तो इट इज नॉट अलाउड। ओके। आई थिंक इसीलिए आपको एरर आ रहा होगा। आप नया टेबल बनाओ, उसमें ऑर्डर सही से कर दो, पार्टीशन शुड बी द लास्ट, और इंसर्ट क्वेरी में भी उसी तरह से होना चाहिए। बट सर टेबल में तो कोई ऑर्डर नहीं था ना, क्योंकि वो तो कंट्री पार्टीशन बाय लिखा था ना हमने। मैं बताऊंगा। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये आपके पार्टीशंस बन गए हैं, यहाँ पे पार्टीशंस लोड हो गए हैं, ठीक है। आप इंसर्ट कर रहे हो तब इशू आ रहा है, राइट? यस सर। हाँ, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इंसर्ट करते समय हम जो ये क्लॉज देते हैं एक, हाँ, ये जो कंट्री कॉलम यहाँ पर होता है, सिस्टम विल अंडरस्टैंड दैट ये जो लास्ट वाली वैल्यूज हैं, दे आर फॉर दिस कॉलम, not this, not this, it will look for this or this or this, ठीक है। तो considering this in mind, try it again or else ping me the error that you are getting, I'll tell you. Sir, still I'm getting the error after inserting the country name after in the end. What is the error? Cannot recognize input near partition country in statement. वो आपकी क्वेरी का सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ है। पिंग मी द सिंटेक्स, इंसर्ट क्वेरी सिंटेक्स। ओके सर। सर वैसे राइट से ही कॉपी होगा? हाँ, राइट क्लिक, कॉपी एंड सेंड इट टू मी, आई विल हेल्प यू। कुछ सिंटेक्स में गड़बड़ है। So guys, give me some time, I'll be back after 15 minutes. Okay, we'll connect around 11:40, 11:45. Meanwhile, you practice this and see the data. If someone of you can do that, please do HDFS DFS -ls and see that you will get multiple partitions in the HDFS. Please try it on your own and I'll explain you. Okay, I'll be back in some time.
Hi guys, I am back. Please let me know if you are able to do it. Partitioning is working fine for you. किसी को कोई issue आ रहा है, error आ रहा है तो please do let me know. Thursday is throwing parsing exception. Yes, sir. There are a total of 3 partitions created stored in 3 different directories. Perfect, Aditi. Is throwing parsing exception. Pragesha, ideally, okay. ये आप कहाँ रन कर रहे हो? आप हाइव में नहीं रन करना ना आपको ये क्वेरी. HDFS DFS वाला क्वेरी हाइव में रन नहीं करना, हाइव के बाहर रन करना है. वो पार्सिंग एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है. गेटिंग इट? Guys, anyone else? Yes, new terminal. Open a new terminal and do it. Guys, anyone else? किसी को कोई क्वेश्चन डाउट उसमें? Karan, can you make me presenter? I think I don't have the presenter right. Karan, you are there? Pradisha, okay. What's not giving you the output? I didn't get it. Which command you are trying? HDFS DFS -ls के बाद आपको लोकेशन डालनी है ना. आप जब डिस्क्राइब फॉर्मेटेड करते हो टेबल तो उसकी कोई लोकेशन आती है, राइट? आप HDFS DFS -ls को कैसे बताओगे कि कहाँ पे फाइल ढूंढनी है? उसको उस हाइव टेबल के अंदर फाइल ढूंढनी है ना. तो जो लोकेशन वहां आई है डिस्क्राइब फॉर्मेटेड पे वो डालो यहाँ पे. I am sharing my screen. I'm showing you. 1 minute.
सो प्रगिशा HDFS DFS -ls के बाद वो लोकेशन डाल दो, इट विल वर्क. Okay, so now let's see here. अब आप लोग क्या करो, आप ना एक अलग टर्मिनल ओपन कर लो आप सब, एंड लेट्स रन दी कमांड्स देयर. Okay, so currently though on my screen you are just seeing the yarn console. My jobs are complete. Okay, so दो टेबल्स में मैंने डेटा राइट किया, एक नॉर्मल टेबल और एक पार्टीशन टेबल. So we will now see how it's different. I think net went bit slow. Just a minute. Okay, so guys, if you see my screen now, अगर आप HDFS DFS -ls चलाएंगे सिर्फ, तो ये क्या करता है, ये आपको हडूप के होम डायरेक्टरी का पाथ देता है. होम डायरेक्टरी मतलब कि जो भी यूजर हडूप में एक्सेस कर सकता है उसको एक होम डायरेक्टरी असाइन की जाती है. तो HDFS DFS -ls वो आपकी होम डायरेक्टरी का कंटेंट आपको दिखाता है. तो वो एम्प्टी भी हो सकता है, बिकॉज आपकी होम डायरेक्टरी मतलब जैसे राहुल एक यूजर है तो उसकी राहुल नाम की एक डायरेक्टरी होगी, आकाश अगर एक यूजर है तो आकाश नाम की एक डायरेक्टरी होगी. तो कभी भी आप सिर्फ HDFS DFS -ls अगर करते हो तो इट लिस्ट द कंटेंट ऑफ योर होम डायरेक्टरी. ओके, जैसे कि मेरे केस में क्लाउडेरा यूजर से मैं लॉग्ड इन हूं, तो क्लाउडेरा यूजर का जो फोल्डर है हडूप में, उसमें दो फाइल्स पड़ी हैं, ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स 26 जुलाई. ओके, बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है. मेरी रिक्वायरमेंट है कि उस टेबल के अंदर क्या कंटेंट है वो देखना. तो टेबल के अंदर जो कंटेंट है वो मुझे तब मिलेगा जब मैं उस टेबल को डिस्क्राइब करूंगा. डिस्क्राइब फॉर्मेट EMP. So as soon as guys you describe, so इस तरह से हमें लोकेशन दिखती है, राइट. इफ यू, मैंने पिंग किया आप लोगों को, जब आप डिस्क्राइब फॉर्मेटेड करते हो टेबल को तो हमें इस तरह से लोकेशन दिखती है. तो इस लोकेशन को हमें कॉपी करना है. ओके प्रगेशा, सो जस्ट कॉपी दिस and change this query here in HDFS DFS -ls. Paste this path
and enter. So I'm pinging you. Okay, I have pinged you guys. So this is how you will check it. Okay. So similarly, we will also check for the partition table. So you also need to check for the partition table similarly. सो ये हाइव कंसोल पे आप डिस्क्राइब फॉर्मेटेड चला सकते हो और यहाँ से जो भी लोकेशन निकलेगी वहां जाके आपको बस पेस्ट करना है. तो गाइस प्लीज पिंग मी इफ दैट इज डन. So guys, if you can see my screen, what it's showing here is तो अगर आप देखें HDFS DFS-LS राइट, ये जो दिस वन, दिस इज नॉन पार्टीशन टेबल, ये पार्टीशन नहीं है. तो इसमें जितनी भी बार मैं डेटा डालूंगा वो एक ही फोल्डर के अंदर पड़ा रहेगा और सारी फाइल्स होंगी. ये देख रहे हो, ये भी एक फाइल है, ये भी एक फाइल है, एवरीथिंग इज अ फाइल. अब कल को मुझे कोई डेटा रीड करना है तो वो सारी फाइल्स में ढूंढा जाएगा, विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. जबकि ये पार्टीशन टेबल जो है यहाँ पे अगर आप देखें, नाउ दिस इज द पार्टीशन टेबल राइट, AMP_P. इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो ये देख रहे हो AMP_P में सब फोल्डर्स बन गए हैं. कंट्री इज इक्वल टू 100, कंट्री इक्वल टू 101 and country is equal to 102. मतलब these are the main folders, the table folder, but within that you have subfolders for each country or the partition column. और ये बढ़ते चले जाएंगे. कल को आप और डेटा इंसर्ट करोगे तो और नए नए फोल्डर्स खुद से बनते चले जाएंगे. इसी को हम डायनेमिक पार्टीशनिंग भी कहते हैं. डायनेमिक पार्टीशनिंग में ये कॉलम बनते चले जाते हैं खुद ब खुद. स्टैटिक में आपको पहले से बना के रखने पड़ते हैं. तो is it clear guys? Now if you have to look for the data, then you have to go inside this. So let me copy one of these folder or subfolder, and then I will say okay, HDFS DFS-LS, and then I'll paste this and enter. अब मतलब इस टेबल के अंदर ये जो सब फोल्डर है, उस सब फोल्डर के अंदर मेरी फाइल्स होंगी, डेटा फाइल्स. So now I am only checking for a particular folder to show you the data inside that particular folder, which country is equal to 100 is. So now here you will see that this is the data file. This is the data file. Okay. Yeah, Tanya, you are saying something? So this way guys, we can improve the performance of our queries. Okay. So guys, this is about partitioning. Read about it more, practice it more. We will talk about it again when we talk about bucketing. Okay. Bucketing is similar concept which also helps in creating small buckets. यहाँ हम small partitions बना रहे हैं, वहां buckets बनती हैं. Buckets का अलग
फायदा होता है, we will talk later, but partitioning is like very very important. When we will do bucketing, you will see these things कि आप कितनी buckets बनाना चाहते हो, bucketed column कौन सा है, it is like currently आप कितनी partitions बना रहे हो, partition column कौन सा है. तो जब हम bucketing की बात करेंगे तो number of buckets, bucketed columns वो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, we can see that, but that's later. Okay. There is one important command which is this one, show partitions. There is this important command, show partitions, okay, which show you all the existing partitions of a table. So guys, sometimes in interview they ask you like if there is a table which is partitioned, how can I check its partitions, कि उस table के अंदर कितने सब folders या partitions हैं. तो show partitions and table का नाम, तो there are 3 subfolders, or I would say 3 partitions inside this particular table. Okay, show partitions on EMP. See, अगर मैं EMP table की partitions देखने की कोशिश कर रहा हूं तो वो कहेगा table EMP is not partition table. So show partitions on EMP is saying that table EMP is not a partition table. Okay, so show partitions command runs only on the partition tables, not on the non-partition tables. Okay, this is an important command that helps you to see the column on which you have partition and the values. It's like key value pair, key value, each partition name. Okay, so that is one thing where we did partition by column, by a business column. But yes, people, we can do that. I will explain you. But then we can also do partition by date, which is like another thing. And that example we can only take once we know scoop. So guys, partition में कोई question है? This is partitioning that we have saw today. Bucketing we will see later. But अब partitions में ही और advanced level पे जाने से पहले हमें scoop समझना होगा. That will help us. So now what I'm doing is I'm coming out of this Hive thing, and now we will be learning how to import data using scoop. Okay. You can open my GitHub account. In that we will take the scoop codes from there and we will run them here. So go to my GitHub account, go to this scoop folder. So guys, you can open this link. Open this link. I have pinged you directly to learn scoop.
this is the best website or the best link, which is Apache Scoop. So we will follow this. So if you look, there are a lot of commands: scoop, import, import all tables. So we will start with this. So I have to do scoop import. Yes. So that means there will be a RDBMS, a relational database. So I need to establish a connection to that database, which is, say, for example, this. It will ask me for some username, password, which definitely I need to pass. And this is the table. So what I'm doing is, if this is a database and this is Hadoop, so I am saying, okay, scoop import. That means you want to import the data, but you need to know the IP address of this source system or the host address, which is you have to connect to the source system. So you will provide these details for connection. Okay, this is the connection details. Also, it will ask you for some username, password, which is here, username and password. It will ask for username, password. So you need to just provide these details. You are running the commands in the Hadoop. So from here, you will establish a connection to the RDBMS. Username, password will be for the RDBMS. Table is the table in this RDBMS that you want to import here. तो इस टेबल के नाम का एक फोल्डर यहाँ अपने आप बन जाएगा HDFS में जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे. ओके, तो it is very simple. You will do scoop import. You will connect to a database, give the username, password for the database, and the table of that database that you want to import. That table will come. उसका सारा डेटा Hadoop में आ जाएगा in the form of files. Okay, so let's try to run this. So this is my query. I'm just copy pasting it. You can also try it. इसमें हमें कुछ changes करने पड़ेंगे definitely. Okay, so I am here on the console. I am pasting that command. Okay, so understand, it's very easy. Scoop is very easy. You will say scoop import, but import करना कहाँ से है? यहाँ से. कौन सा टेबल करना है? ये वाला. Okay, that's the bare minimum thing. Enter. Now it will start map reduce job. Scoop also runs map reduce. Okay, but scoop में सिर्फ मैपर चलते हैं, रिड्यूसर कभी भी नहीं चलते. स्कूप में रिड्यूसर कभी भी नहीं चलता. ओनली एंड ओनली मैपर, बिकॉज स्कूप का काम कुछ एग्रीगेशंस वगैरह करना नहीं है, उसका काम सिर्फ डेटा इधर से उधर पहुंचाना है. तो मैपर इज मोर देन इनफ. सो स्कूप जॉब इज रनिंग. Okay, scoop job is running. It ran and failed. So I'll explain you what happened. So when I'm running this scoop, it's trying to establish the connection from Hadoop to RDBMS. It's this code generation tool. Okay, the code generation tool generates the map reduce. This code generation means generating the map reduce for this scoop job. It's running it. But then communication link failure happened. Means I'm not able to establish a connection with the RDBMS. So there is some error. The RDBMS that I'm using is a MySQL. Okay. So गुलजार, मैंने एक तो लिंक भी पिंग किया है और क्वेरी भी पिंग की है, दोनों पिंग की है. आप लिंक पे जाके पढ़ सकते हो और क्वेरी को डायरेक्टली रन कर सकते हो. दोनों पिंग किए मैंने.
ओके सर वो तो ठीक है, पर दोनों को आपने एक साथ लिखना है, इससे फोन क्लियर नहीं हो रहा, मतलब नहीं, एक आपका लिंक है वेबसाइट का और दूसरी आपकी क्वेरी है ना, उसमें मतलब क्या डाउट है मुझे बताओ। एक आपका लिंक है, अच्छा सर, एक बार एक आप इन आपका, दोनों को अलग अगर ये भेज सकते हो। अलग अलग ही भेजा है ना मैंने, ये आपका मैंने आपको लिंक भेजा है ठीक है। और ये मैंने आपको क्वेरी भेजी है, ये दो चीजें तो भेजी हैं आपको अलग अलग। अच्छा ठीक ठीक है, ओके सॉरी। मतलब ये लिंक और ये क्वेरी अलग अलग ही तो भेजी है ना मैंने, कुछ साथ में तो भेजा नहीं। ओके 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 सॉरी सर। नो नो प्रॉब्लम। तो मैंने ये अब स्कूप की कमांड चलाई, लेकिन स्कूप फेल हो गया। अब इसका फेल होने के पीछे का कारण क्या है कि आपकी कनेक्शन एक्सेप्शन आ रही है, कनेक्शन रिफ्यूज। तो गाइस बाकी लोग भी प्लीज एक बार रन कर लो और मुझे बताओ कि उनको भी कनेक्शन एरर आ रहा है। अब ये कनेक्शन एरर आना ऑब्वियस है, बिकॉज भाई हमें तो पता ही नहीं ना ये किस माइसिक्वल को पॉइंट कर रहा है, हमें अपने माइसिक्वल को पॉइंट करना है, ये उसका माइसिक्वल है। तो इसीलिए मुझे जो कनेक्शन एड्रेस है वो प्रॉपरली देना जरूरी है। So guys, please ping me if all of you ran this, got the connection error, read it. तो हाइव मतलब एक तरह से हमारा हो गया है, उसको हम और एलैबोरेट करते रहेंगे with partitioning, bucketing, all those things more and more. But now we are moving into Scoop, and Scoop is a very easy tool. But the only important thing is this connection clause. ये अगर आप समझ जाओगे, it's done. So guys, I am waiting for all of you to ping me. Aditi, what's the error? Acha, you got the error, right? Perfect. Others, please let me know if you are getting the error or not. Getting error, no such file or directory. Okay, no problem. So guys, now what we have to do is we have to solve this problem कि आपको स्कूप तो सही काम कर रहा है बट वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है आपके माई सिस्टम से। तो नाउ वी विल चेक द माई विच इज अवेलेबल। तो बाय डिफॉल्ट जो क्लाउडेरा मशीन है उसमें माई अवेलेबल होता है हमारे पास। तो वी विल जस्ट से माई एंड एंटर। इट्स सेइंग एक्सेस डिनाइड, तो आई एम सेइंग माई -u root, which is again access denied, MySQL-u root-p root. सो अभी हमें बस MySQL पे कनेक्ट करना है, -u root-p which is password. So let me just check कि इसका पासवर्ड क्या होता है। MySQL
password on Cloudera. Okay. So MySQL -u मतलब user is root -p which is like password is Cloudera. Okay guys, perfect. तो देखो अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमने if you look at my screen, our purpose is use Scoop to bring in data in Hadoop from some external database. So I did that, but the connection to that database is not established, right? Because this db.foo.com is their IP address, but मेरा MySQL का IP address क्या है? वो local host है, right? और ये मेरा database है और ये मेरी टेबल है। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे MySQL में क्या ये database या ये टेबल एग्जिस्ट करते हैं। अगर नहीं करते तो मुझे कोई और database यहाँ देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सब क्या करेंगे, अभी MySQL में कनेक्ट करेंगे MySQL -u which is user root and -p, enter, password is Cloudera, and please confirm if you are inside this guys, if you are inside MySQL. Very good Pragisha, others please let me know. So we are connecting to an RDBMS so that we can import this data. Perfect. तो MySQL की कमांड्स हाइव की तरह ही होती हैं। जैसे आप कहोगे भैया शो टेबल्स, तो वो शो टेबल्स करेगा, बट नो डेटाबेस सिलेक्टेड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप बोलोगे शो डेटाबेसेस, it will show the databases. So there are so many databases. Guys, see this metastore? This is Hive metastore. So please don't access this because ये Hive का metastore है. You should not access this. So what we can use a retail database. ये एक retail company का database है. So use retail _ db. So I am inside this db. Now I will say show tables. So there are, see, orders, products, so many tables. तो गाइज हमने क्या देखा कि हम एक RDBMS में जा चुके हैं, उसके अंदर एक डेटाबेस में जा चुके हैं, उसके अंदर इतनी सारी टेबल है। अब कल को मैं आपसे कहता हूं कि ये वाली टेबल उठा के हडूप में मूव कर दो, तो आप स्कूप यूज करोगे, लेकिन उससे पहले हमें दो चीजें करनी होंगी। हमें ये पता होना चाहिए कि ये टेबल का स्कीमा क्या है और इसके अंदर रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो इसका स्कीमा कैसे पता लगेगा, डिस्क्राइब प्रोडक्ट्स। So when I describe the products, यहाँ describe formatted नहीं चलता, hive की तरह सिर्फ describe. So there are 6 columns. So I know there are 6 columns inside this table. Products table के अंदर 6 column है। Total number of records कितने हैं इसमें? Select count of star from products. Guys, this query will run MapReduce or not? Please tell me. This query will run MapReduce or not? Yes or no? Guys, it will not run it because I am running it on the MySQL. This is not Hive. Since this is MySQL, this will not run MapReduce. Okay, simple. MySQL is a relational database. चाहे वो Hadoop के डेटा नोड पे भी क्यों ना इंस्टॉल्ड हो, that does not matter. It's a relational database. It will not run MapReduce. So total there are 1300 records, 1345 records, and these many columns that I need to import. So I know the table name and the column name. So I can exit this. And now I can run that scoop again, that scoop query. Where is that scoop query? Yeah, perfect. Now I will tweak it, some minor changes. देखो
You are saying scoop import, very good, but you want to connect to a database which is a MySQL database, but what is the IP address of it or the host name? It's local host. This database is on my local machine, local host. Which database? Corp? No, it's retail DB. Which table I want to import? Products. That's it. So let me ping you this. Copy, paste. Okay, run this. But you should know what I have done. ये जो error आई है, we will resolve it. But you see this scoop import, very good. कहाँ से import करना है? यहाँ से MySQL जो मेरे local host में है उसके इस database में से ये वाला टेबल. बट अब देखो ये क्या कह रहा है. पहले कनेक्शन एक्सेप्शन आ रही थी, अब एक्सेस डिनाइड आ रहा है. वो एक्सेस डिनाइड क्यों आ रहा है? वो कह रहा है भाई इसका यूजर नेम पासवर्ड तो बताओ MySQL का, जो कि रूट और क्लाउडेरा है. तो मुझे उस क्वेरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा. I just need to modify it a bit. So I can give -u, which is root, and enter. -u, which is root, the username root. अब देखो क्या हुआ. Unrecognized argument कह रहा है I don't understand -u. That's fine. So there is --username root. मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है ये सारे. -u अगर नहीं चल रहा तो --username ये एक दूसरा पैरामीटर होता है. हम वो ट्राई करते हैं. ओके, अभी वो चल गया. अब वो कहाँ गया? हाँ, अब फिर से एक्सेस एरर आई. कह रहा है कि भैया रूट यूजर तो ठीक है बट हमें पासवर्ड तो बताओ. उसे पासवर्ड नहीं दिया मैंने. कहता ओके चलो ठीक है. तो गाइस अंडरस्टैंड हम कि एक एक लेवल की एरर्स को कैसे रिजॉल्व करना है. हाइफन पासवर्ड विच इज क्लाउडेरा, एंटर. तो मैंने स्कूप को बोला इंपोर्ट फ्रॉम दिस प्लेस विच इज अ MySQL database, this table along with the username and the password for this MySQL database. And if you see now it's running. See, it generated a MapReduce, a MapReduce jar file in some temporary folder. It's importing the data. It's connecting to the resource manager. See, it's running a MapReduce job. But as I told you, there will be only mappers, no reducers. You can track this application in yarn और this job. मतलब पहले हम उसको जॉब कहते थे, yarn की आने के बाद हम उसको एप्लीकेशन कहने लग गए. नंबर दोनों का देखोगे तो सेम है. तो आप जॉब कहो या एप्लीकेशन कहो एक ही बात है. नंबर ऑफ स्प्लिट्स 4, मतलब इंटरनली 4 स्प्लिट्स हुए हैं टोटल डेटा के. एज इन यू कैन से कि 4 मैपर चलेंगे. That's what you can say. So by default स्कूप में रिड्यूसर तो कभी चलता ही नहीं है, सिर्फ मैपर चलते हैं और 4 मैपर चलते हैं बाय डिफॉल्ट हमेशा. आप उसे बढ़ा या घटा सकते हो बट बाय डिफॉल्ट देयर आर 4 मैपर्स. That's you can see number of splits 4. This is input splits. I told you right, within one input split there can be multiple blocks of data. यहां पर देखोगे अगर आप ये चीज इनपुट फॉर्मेट,
जैसे हमने टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट, जेसन, एक्सएमएल, पार्कवेट, ओआरसी सबकी बात की. There is a DB input format. When your input is from a database, you are reading data from a database, right? So it's a DB input format. This query will take some time because there are 1300 records, and plus these machines are very simple machines. Means our machines are very basic ones. So guys, please let me know if you are able to run this query, this scoop import. Perfect. So Pragisha, वो complete हो गई है क्या? Okay, Gomini. Thank you. So you guys can check in HDFS. There will be a folder created with this name, the table name, and inside that there will be 4 files. क्योंकि 4 मैपर चले हैं गाइस, हर मैपर अपनी अपनी फाइल जनरेट करेगा, तो टोटल 4 फाइल्स बनेंगी आपकी. ये थोड़ा हैंग हो गया, लेट इट कंप्लीट. तान्या, हाइफन पासवर्ड अपनी कमांड पिंग करो मुझे एक बार. इट्स हाइफन पासवर्ड स्पेस रूट. पिंग मी द कमांड, आई विल टेल यू उसमें क्या गड़बड़ है. आपका डेटाबेस कहां से ले रहा है वो रूट को? दैट इज नॉट करेक्ट. रूट इज द यूजर, नॉट द डेटाबेस. So it should be hyphen username. मैंने आपको फाइनल क्वेरी पिंग किया तान्या, ये वाला क्वेरी चलाना है. तान्या, can you please ping me your query? Guys, other than Gomini and others who have completed it so far, I think Pragisha, Gomini, they have done. Tanya, is it working now? Aditi, Karan, Varsha, Rahul, please let me know if you guys are able to do it. Gulzar, are you able to follow it? तो करण, मतलब माई सीक्वल से तो मैं बाहर आ चुका हूँ, ठीक है. आई एम नॉट इनसाइड माई सीक्वल नाउ. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस स्कूप क्वेरी शुड नॉट बी रन फ्रॉम माई सीक्वल. उसके बाहर आपको चलानी है. तो वो जो यूज वगैरह था वो सब तो हम माई सीक्वल के अंदर बस चेक करने के लिए गए थे
कि भाई हमारा जो MySQL है उसके अंदर कौन सी डेटाबेसेस हैं, कौन सी टेबल्स हैं, और फिर हम उससे बाहर आ चुके हैं। MySQL के थ्रू थोड़ी नई कमांड चलानी है, ये तो स्कूप इज अ हडूप कमांड, तो वहां से चलेगी। अच्छा गुलजार, कोई नहीं, आप वेट कर लो, बट ये कमांड मैंने पिंग कर दी है, यू कैन रन इट। तो अपने MySQL में हमेशा जाकर देखो कौन से टेबल्स हैं और उनको फिर आप इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो Karan, please try it and let me know. And if you see guys, here map reducer is currently running, but it is always a mapper, no, never a reducer. ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। So it's only mapper job, never a reducer will be running, and by default number of mappers will be 4 because the input splits are 4. So if you look at guys, the output of the scope is it ran a MapReduce framework. That MapReduce framework, see 1345 रिकॉर्ड्स रीड किए गए और उतने ही राइट कर दिए गए। तो नाउ लेट्स सी कि आखिर ये डेटा HDFS में कहाँ दिखेगा। तो यू हैव टू से HDFS DFS-ls, ओके, एंटर। मतलब आप कहाँ देखने की कोशिश कर रहे हो, यूजर जो क्लाउडेरा है उसके फोल्डर के अंदर, जिस यूजर से आप सिस्टम में लॉग्ड इन हो, उस यूजर के सिस्टम में इसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज इफ यू लुक हियर, you have this products folder which is loaded on today's date. Now if you want, you can further look inside it. HDFS DFS-ls products folder के अंदर क्या है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला 4 मैपर चले हैं, तो 4 पार्ट फाइल्स होंगी। पार्ट फाइल्स मतलब पार्ट में जो फाइल्स बनती हैं, M मतलब मैपर, और ये पहला 0 1 2 3 4 जो मैं कल भी आपको बता रहा था कि मैपर, हर मैपर अपनी आउटपुट फाइल जनरेट करेगा और उनको हम पार्ट फाइल्स कहते हैं। उनका नंबर देख के पता लग जाता है ये पहला मैपर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये एक हिडन फाइल होती है _success, जो सिर्फ ये बताती है कि आपकी मैप रिड्यूस जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर कुछ डेटा वगैरह नहीं होता, इसका साइज भी 0 बाइट्स का है, बट दीज आर योर एक्चुअल डेटा फाइल्स, these 4, okay. So guys, what we did was we went into MySQL to just check the tables in the databases. We came out of it and then we ran the scoop. Scoop imported this table from MySQL to Hadoop. So now this data is available in Hadoop. If you want, you can open any one of these files. Let me open one of these, copy HDFS DFS-cat to see the content, right? I want to see the content. तो स्कीमा क्या था प्रोडक्ट टेबल का, 6 कॉलम थे उसके अंदर, देयर वर 6 कॉलम्स, सो मींस ईच रो will contain 6 columns. So this is my data. If you look at guys, let me take them in Notepad because it will be easy. So it's not allowing me to
take the data out of the system. But if you look at, guys, this is first value, comma separated second value, comma separated then third value, then fourth, fifth, and then the sixth. So there are total 6 columns, each are comma separated. So the default separator of Scoop is comma. So Scoop will generate the files which are comma separated. So ये सारा डेटा एक्चुअली एक टेबल से लाके यहाँ डाल दिया गया. So guys, please ping me those of you who are done with checking the MySQL, retail database, products table, and then able to import it in HDFS, and then able to check in HDFS that the data is available, comma separated. तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं. हाइव में डिफॉल्ट सेपरेटर कंट्रोल ही होता है, लेकिन स्कूप में it's comma, because you can see this, right? The files are comma separated files. टेबल के अंदर तो कोई सेपरेटर होता ही नहीं है. अगर मैं MySQL की बात करूं, उसमें तो कोई सेपरेटर था ही नहीं ना, तो ये कॉमा से कहां से आ गए? Scoop generates comma separated files. Okay, so I'll hold on for like 2 to 3 minutes here. Please do it, and then I'll start from there. So after 2 minutes we will again start. Yes, Aditi, correct, because by default 4 mappers will run, right? You can change that, but by default 4 mappers will run. So Aditi, you will get 4 files, right? 4 part files.
Okay, guys, I'm back. Now, any questions? Let me check. I just pinged long back because you were asking. Oh, okay. So that command you used to view the data, can you please display it, sir? Minus stick is mapper. So Pragisha, it will complete in some time. I request from the internet provides. No. इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है इसका. जो आपके मैपर रिड्यूसर चलते हैं आपके लोकल मशीन पे चलते हैं, इंटरनेट से उसका कोई लेना देना नहीं है. Done checking products on the HDFS. It moved to HDFS from my. Okay, perfect, Rahul. Karan, what was the command to check the data in HDFS? Okay. So to check the data in HDFS, it's so guys, if you look at these are the commands. So see, I'm pinging you all these commands. I'm pinging you copy and paste. Wait. Copy. Okay, it's not going. No problem. So if you look at, guys, we started with MySQL. After that, जब हमें पता लग गया कि MySQL की कौन से डेटाबेस से कौन से टेबल लेनी है, तो हमने स्कूप कमांड चलाई. जब डेटा HDFS में आ गया तो हमने बस HDFS में देख लिया. सबसे पहले हमने HDFS में ये देखा कि वो फोल्डर बना कि नहीं. फोल्डर बन गया है तो उसके अंदर फाइल्स कौन कौन सी हैं, और किसी एक फाइल को हमने कैट कमांड के थ्रू ओपन किया. कैट कमांड से हमने उसको ओपन करके देख लिया. ओके, तो दिस आर द 3 steps that we followed, guys. Anyone, any questions in this? Just check if you can open gedit. Gedit is a command to open an editor. Gedit is a command that opens something like Notepad in Linux. So that if you want, you can save your queries. Okay, perfect. So now let's move ahead. Yeah. So far, now we know that whenever you are going to run a scoop, that is going to run mappers, no reducers, and by default 3 mappers. Okay, by default there will be 3 mappers, but can I change this number of mappers? That is something which is important. So if you look here, there is an option which is known as -m, and you say 1. So what will happen? Instead of by default 4 mappers, you will run only 1 mapper. The benefit of this will be that instead of 4 output files, you will get only 1 output file. But the problem with this is, पहले आपने अपना काम 4 मैपर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब एक ही मैपर को वो सारा काम करना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो I'll enter it, बस आपको -m space 1, मतलब मैपर नंबर ऑफ मैपर्स 1 आपने सेट करना है. Scoop will generate the map reduce. That map reduce code will connect to the database, bring in the data to Hadoop, but only with the help of 1 mapper in this case, so it will be slow. Okay. Okay, now see the error. File already exists exception.
इसका मतलब क्या है, द आउटपुट डायरेक्टरी प्रोडक्ट्स नाम की वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, राइट? तो you cannot overwrite it. So in that case, you can change the target directory. So what you can do, guys, is so now we will do two things. So now we will do two things which are very very important. एक तो हमने नंबर ऑफ मैपर्स हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं. बाय डिफॉल्ट 4 है, आप उसको 40 कर दोगे तो और अच्छा है, ठीक है? लेकिन अब टारगेट फोल्डर जो है आपका, वो आप प्रोडक्ट्स नाम से नहीं यूज कर सकते. तो हमें टारगेट डायरेक्टरी जब चेंज करनी हो तो देर इज वन मोर पैरामीटर known as target dir. Okay, in that we can set up, say, products 1. Okay, in this case now what I am saying is, because products folder is already there, I don't want to overwrite it. Okay, I want a custom target directory, so this is target dir. I'll enter. I don't know ये पेस्ट होना क्यों बंद हो गया. Okay, so now what it's saying is unrecognized argument target directory. Okay, टारगेट डायरेक्टरी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो सॉरी. Okay, it is warehouse directory. So target directory की जगह it's can be the warehouse directory. So the target directory where I want this data, I am saying it's the warehouse directory. What happened? Setting a password on the command line, consider this error passing the argument, unrecognized argument, unrecognized argument. Okay. Oh, okay, okay. नहीं वो target directory रहेगा. I think ये मैंने double quotes में नहीं डाला. Sorry. The path which I gave, the target directory path, I didn't give it in the single quotes or the double quotes. I think that's the problem. Nothing else.
Oh, okay. Yeah, Gomini, you are right. I missed that hyphen. So, guys, whenever you are putting any flag or argument, it should be like hyphen. Okay. This hyphen, I missed it. So it's working fine. Okay. So what you guys can do is number of mappers as 1, and the target directory you can give some target directory, it will run. So remember, you can increase or decrease the number of mappers. That is one thing. Increasing number of mappers will increase the performance. And then target directory is like every time it needs a new directory for scoop import. So you have to give the target directory properly. So it's hyphen target directory. यहाँ पर आप डबल कोट्स में SDFS का कुछ भी पाथ दे सकते हो, जैसे मैंने पाथ दिया यहाँ पे, आप अपना भी कुछ पाथ यहाँ पे सेट कर सकते हो, अपना एक पर्टिकुलर पाथ यहाँ पे सेट कर दो। तो प्रोडक्ट्स क्योंकि ऑलरेडी था तो मैंने प्रोडक्ट्स 1 दे दिया। तो इससे मतलब अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि टारगेट डायरेक्टरी शुड नॉट एग्जिस्ट। स्कूप क्रिएट्स इट्स टारगेट डायरेक्टरी ऑन इट्स ओन। पहले से ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। आपको स्कूप को बस बताना है कि भैया यहाँ पर डायरेक्टर डालना है। स्कूप कहेगा ठीक है, ये फोल्डर मैं खुद बनाऊंगा, पहले से नहीं होना चाहिए वो फोल्डर। ओके, तो आपका जो भी पाथ था आप उसको चेंज करके दोबारा से कर सकते हो। ये पूरी प्रक्रिया ये जब कंप्लीट हो जाएगी SDFS-DFS-LS, अब मैं अगर अपने फोल्डर में देखूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स 1 नाम का फोल्डर बन चुका होगा। सी, अब कल को मुझे दोबारा स्कूप चलाना है तो हम हर बार एक नए फोल्डर बनना चाहिए। अगर हमने पुराना फोल्डर दे दिया तो वो फेल हो जाएगा। Guys, is it clear how to change number of mappers, how to change the target directory, why to change the target directory? There is one very important thing on selecting the best number of m. आखिर m की वैल्यू बेस्ट क्या होनी चाहिए? Consider that this is a database and this is Hadoop. Number of mappers 4 means there are 4 connections that you establish with your source database. Okay, so whenever you are running a scoop job in Hadoop with default number of mappers 4, that means Hadoop will create 4 parallel connections to the database. Now say you change this value to 400, that means your Hadoop will create 400 connections to the database to parallelly process the data in 400 pipes. Some data here, some data here, some data here, to be very fast. But the problem is, what if your source database allow only 100 connections and you are using 400? It will fail. So you need to talk to the administrator of the source database कि भाई what should be the ideal value of connections you allow or the maximum connections that you allow. Because even if you say I allow 100 connections, you cannot use all 100 because there will be other people who need to use this system. If you consume all the 100 parallel connections, what if other people also want to connect to this database to read the data? So if this database allow 100, they will allow you say around 10, 50, whatever, but not too much. Otherwise, if you start a scoop job, other people will sitting idle कि भैया पहले ये कंप्लीट होगा तब जाकर ही कुछ होगा। समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ मैपर्स डिसाइड करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. You have to talk to the source team, the RDBMS team,
to get you the best value of this particular stuff, the connections, parallel connections. Okay, any questions here? Guys, anyone, any question? Gulzar, I'll explain. Okay, before that, anyone, any question? Okay, perfect. So Gulzar, what I'm saying is, whenever you are running a scoop job, you are running it on the Hadoop side, right? So what Hadoop do? Hadoop makes a connection to the source system. How many connections? By default 4, but you can increase or decrease it. So the number of connections should be defined very properly. You cannot blindly set any value here, because अगर आपने सारी कनेक्शंस आप ही ने कंज्यूम कर ली उस सिस्टम की, बाकी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने आप नंबर ऑफ मैपर सेट करोगे उतनी आउटपुट फाइल्स बनेंगी। तो अगर 400 मैपर्स हैं तो 400 आउटपुट फाइल्स बनेंगी आपके फोल्डर में। ओके, that's what the process is. And this was about the import. Similarly, you can export the data. For example, if there is some folder in HDFS, you can move that data to a table in RDBMS. So a folder data can be moved into a table also. So that's known as a scoop export. Okay. So guys, go through this link. This is very detailed, but let me explain you important things. Scoop import अभी आपने देखा. Scoop import all tables. That's also there. Okay. So what scoop import all tables do? It connects to your database, whichever database you have, but you don't specify the table. It will import all the tables which are present inside that database. अभी हमने थोड़ी देर पहले MySQL में देखा था कि MySQL में रिटेल डीबी में करीब 6 टेबल्स थे, 5 या 6 टेबल्स थे। तो अगर आपको सारे टेबल्स इंपोर्ट करने हैं तो स्कूप import all tables can be done. Okay, you can do that. What that will do, that will create one folder for each table. Let me show you that. See, ideally in real world we don't do this. In real world we import tables one by one. तो अगर मेरे एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हैं तो मैं एक एक करके उनको इंपोर्ट करता हूँ, सारी एक साथ नहीं करता। ओके, बट अगर आपका डेटाबेस छोटा है जिसमें 2-4 टेबल्स ही हैं तो आप ये काम कर सकते हो, which is import all tables. Let's see what happens. Now all the tables, oh sorry, ये कीवर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए था। See, वो यहाँ पे एरर कर गया। आपको टेबल नहीं बतानी है, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हो सारे टेबल्स इंपोर्ट करो। तो इंपोर्ट ऑल टेबल्स, ओके। So scoop import all tables.
connect this username, password, and do this. So what is it doing? It's running a MapReduce job to bring in data for all the tables. So first it's bringing the categories table. So it will bring tables one by one. So first it will bring categories table, then products table, like that. So it will run multiple MapReduce jobs, one for each table. So multiple MapReduce jobs will be running to bring in the data. It will take some time, okay? So meanwhile, let's move ahead. Similarly, there is a scope export command, which is there to send data back from HDFS to RDBMS. Okay, you can do that. So scope import and export, these are the most important things. There are too many things in scope which are not that important for you as an analyst. Okay, so just focus on scope import and export. These are the most important thing. So let's see what's happening behind the scene. Yeah. So अभी categories ही चल रहा है तो ये time लेगा. So if you want, guys, you can also start it. Scoop, import all tables, connection, that's it. You don't need to pass in anything else, like no table name, nothing. Just import all tables. बस एक चीज मैं आपको बता दूं, कैटेगरीज टेबल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है. अब वो नेक्स्ट टेबल कस्टमर्स पे जा रहे हैं, ये भी हो जाएगा. बट जब ये प्रोडक्ट्स टेबल को इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा गाइस, ये फेल हो जाएगा. कैन एनीवन टेल मी व्हाई? ये उस डेटाबेस के सारे टेबल्स ला रहा है, कैटेगरीज टेबल्स भी हो गया, कस्टमर्स भी हो गया. अब ये थोड़ी देर में प्रोडक्ट्स टेबल को लाने की कोशिश करेगा, ये फेल हो जाएगा. यस अदिति, वेरी गुड. यस करण, गोमिनी, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये प्रोडक्ट्स पे फेल हो जाएगा. तो हमें क्या करना चाहिए कि मेक श्योर कि प्रोडक्ट्स फोल्डर वहां हो ही ना, उसको या तो डिलीट कर दो. बट इट इज फाइन, लर्निंग के लिए एरर्स आर गुड. ओके, so guys, you can do this scoop. Okay, so similarly I request you guys to practice more of scoop import, scoop export, everything. Let me give you some more knowledge on few additional things. Okay, so guys देखो, हमारे स्कोप में यहाँ पे सिर्फ स्कूप ही है आपके स्कोप में. बट what are the other tools to bring data from an RDBMS to Hadoop? Can anyone tell me? अभी आप लोगों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है Hadoop सिस्टम की. ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, लिनक्स, हाइव एंड स्कूप. बाकी चीजें सिर्फ एड ऑन है. मैपरेड्यूस भी आपने देख लिया क्या होता है, कैसे चल रहा है, नंबर ऑफ मैपर्स भी बढ़ा घटा सकते हो. तो यू गाइज नाउ हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. Now, other than Scoop, what are the tools that can be used to bring data? Gomini says Flume. I'll park it for the time being. Other than that, guys, please, we saw the Hadoop ecosystem, right? There were so many tools. Kafka,
You forgot, guys, Kafka. Guys, you heard about it or no? Kafka? Yes, no? Rahul, Aditi, Gomini, Karan? No, that's fine. Gomini, you are absolutely correct. But what I'm currently asking is, what are the ways to bring in the data? And you are absolutely correct, Gomini, that it's for streaming. Okay. तो गाइस देखो, गोमिनी का पॉइंट बिल्कुल सही है और अदिति का पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि मैं पूछ रहा हूं आरडीबीएमएस, इसलिए मैंने इन चीजों को यहाँ पे पार्क कर दिया। मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि आरडीबीएमएस से डेटा लाने के तरीके क्या हैं। तो फ्लूम और काफका उस काम के लिए है ही नहीं। फ्लूम और काफका हडूप में डेटा लाते हैं बट आरडीबीएमएस से नहीं लाते। आरडीबीएमएस से डेटा लाने के लिए मेरे पास ETL टूल्स होते हैं गाइस, रिमेंबर या भूल गए? बताया था मैंने। ETL की फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। निष्ठा, अदिति, राहुल, गोमिनी, थैंक्स अ लॉट। Okay, Pravisha, perfect. Other people, please ping me. Don't think that others have pinged it. Gulzar, Vipul, Varsha. We talked about it, right? ETL tools, which extract the data from source, transform it, and then load it in the target. Very good, Rahul. Yeah, Pentaho. So, what are different ETL tools? I told you in the last class, Informatica is the leader. Very good, Karan. Informatica is the leader. Talent is now, आजकल क्या होता है ना, सिर्फ टैलेंट बिग डेटा की ओपनिंग निकल रही है। वी नीड पीपल हु आर गुड इन टैलेंट एंड बिग डेटा। देन यू हैव पेंटाहो। दीज आर वेरी वेरी फेमस टूल्स। Informatica is the market leader. Then you have Talent, you have Pentaho. Yeah, Karan, you have ODI, which is like Oracle Data Integrator. ODI, Oracle Data Integrator. So there are a lot of tools, but I would say that these three are the market leaders, and even within that, these two are the best ones. Okay. So you can use ETL tools also for moving data from RDBMS to Hadoop and Hadoop to RDBMS. But now the question is, what are the other ways to move data in Hadoop? So Flume and Kafka are two other ways of moving the data. But which kind of data? This is for streaming data. Streaming data. Whereas the above ones, these are for batch data. So whenever someone asks you, if I have batch kind of a data, then the tools are Scoop and the ETL tools. Okay. But if it's streaming data, real-time data, then you will use either Flume or Kafka. Okay. There is one more thing which is available in the market now, known as Kafka. Okay, Kafka, which is nothing but Flume plus Kafka. Kafka. Matlab you use both Flume and Kafka, it is Kafka. Okay. There is one more thing which is known as Apache Samza. Okay. So like that, there are a lot of things, but you don't need to study everything. Okay. So streaming data, Flume, Kafka, Kafka, Samza are there. Streaming data क्या होता है कि भाई ट्विटर, फेसबुक, उन पे हर मिनट हर सेकंड कोई ना कोई ट्वीट्स आती रहती हैं। तो जैसे कोई ट्वीट या कुछ हो, इमीडिएटली वो हडूप में आ जाए। I don't want to wait for a batch which runs every few hours. Okay, a batch job may run every few hours.
I don't want that. I want as soon as someone tweeted, that tweet should immediately within seconds be stored in database. I don't want to wait for 4 hours or 6 hours. I want within seconds that data should be loaded in Hadoop. So that's what is real time or streaming data. For that we have these things. Definitely this is not in your scope, but yeah, you should be aware about these. Yeah, Nishtha, tell me. Nishtha, you are asking something? So Nishtha, okay. See, SPSS is a machine learning tool. It's statistical package for social sciences. Okay. SPSS की full form है Statistical Packages for Social Sciences. It was given by a company known as Clementine. Later on, this company Clementine is bought by some other company. I don't remember, Oracle or SAP. Okay. I worked on SPSS when I was in college. Okay. During my third year, I worked on SPSS with my professor who was doing some PhD. So this is that old. Okay. Around 15 years back, I worked on it. It's good. They lot of it has changed too much now. I think Microsoft have bought it. Let me check it. So SPSS is for machine learning, Nishtha. Okay. It contains the statistical packages and data science packages and models, machine learning models, neural networks, genetic networks. Okay. Like that. So SPSS is not a data integration tool, it's a data analytics tool. It's a data analytics tool, okay? Not a data integration tool. Same is with the Strata, okay? There are a lot of tools. Okay, great, Vipul. That's nice to know. So there are a lot of tools, Nishtha. There is a tool known as VACA from the University of New Zealand, which is also good. Okay, so there are a lot of tools, okay? Stata, VACA. Nishtha, Julia is a programming language like Python. So Julia will replace Python for data science in coming time. And it's almost similar like Python. But it's too early for me to say that, okay? That Julia will replace Python. But this is what people are thinking about. पहले Go लैंग्वेज आई थी, अभी Go उतना फेमस हो नहीं पाया, तो अभी जूलिया चल रहा है इस समय. ठीक है? Okay. We can keep talking about these things. Actually, there is too much. But yeah, VECA from the University of New Zealand. If you see NZ, New Zealand, they have given this open source machine learning software. You guys can download it and practice it. Similarly, there is Stata, okay, which is also available. So SPSS, there is this SAP tools also. Okay, SAP also have some tools, and then this is Stata, VECA. Okay. Okay, Gulzar, yeah, you had some question. Tell me. Correct. I saw your question, Gulzar. Why they are market leaders is because of their adaptability. Most of the companies, they uses these tools, okay, Gulzar, Informatica and Talent, because they have lot more features when compared to other tools. Okay, Gulzar, they have more features as compared to other tools, and that's why they are market leaders. Plus, these companies are investing too much. Okay.
No, Karan, these streaming things are not in your scope, because see, again, you guys are data analysts, not data engineers, so you don't really need those, because your work comes when data is in Hadoop, not to bring in the data in Hadoop. But scoop फिर भी मैं बताता हूँ, because scoop is something which is important. But आप scoop भी नहीं चलाओगे अपने real world में. But scoop is something related to SQL, that's why you should know it. Not Flume Kafka, that's not needed. Yeah, Nishtha, definitely. Stata, SPSS, these are necessary tools, but not mandatory. Okay, these are not mandatory. They may be necessary. Remember that difference. So it's not that you must know these tools. Nothing like that. See, necessary as in necessary for your knowledge. And if you know, it's good. But it's not mandatory that someone will say, okay, we will give you a job only if you know this. Nothing like that. It depends. Yeah, it depends on the company and the industry. Okay, guys. So Gulzar, your question is also answered. Guys, anyone, any other question? Yeah, Nishtha, tell me. So these are all statistical and data Sir, science. actually, Yeah, go ahead. Sir, actually, we were told that we have 4 projects, industrial projects, that we will be doing that will be given to the data sets will be given to us by some company. So we'll have some industrial training on that. So, sir, uska like, is that going to happen ever? A capstone project, and there were few more. No, that's good, but I think Damini is the right person to help you on that. Like on your industrial projects or the capstone project. I don't have much knowledge on this, but on your LMS there are some capstone projects, but this industrial projects, that Damini is the right person to tell you. Okay, so there are multiple machine learning tools. We are not talking about them like Veka, Stata and all. What we are interested in is the ETL tools like Informatica, Talent and all. So if you go to Naukri.com, for example, and you try to see for big data, what are the requirements? Okay, it is very important for big data. What are the requirements? So you will get to know more about these things. There are specific jobs which say we need a big data developer who also know Talent. Okay, it's not like mandatory. Again, it's something which is good to know. So Talent is really one of the market leaders in the big data field. You have Informatica also. So, but in Informatica, there are 2 tools. One is known as Informatica Power Center. In Informatica, there is this Power Center. Power Center is not what we use. We use BDE. So Informatica gives Power Center, which is a different tool, but we need BDE or BDM, which is Big Data
management or big data engineering tool. So that's what is very, very famous. So Informatica Power Center was a different tool, which is a data warehousing tool. But for big data, they have BDE and BDM. Okay. Informatica, that's why, Gulzar, I was saying these are market leaders because they have separate tools for separate thing. They are investing a lot. Okay. So Informatica gives you a lot of tools, BDE, BDM and all. Okay. Now, yeah, Gulzar, means it was BDE, BDM, they have different tools. It's big data management from Informatica. Okay. Does Scoop import, export Scoops? So Vipul, that's a good question. Scoop definitely supports majority of the file formats like Parquet, ORC, Avro and all, but it does not support all file formats. You can read through that link which I shared. It's mentioned there very specifically about the file formats that it supports, even the separators that it supports. So yeah, Scoop supports majority of the file formats like Avro, ORC, Parquet, but not all. Okay, you can study that. It's a very good point. सो बीडी का ही नाम चेंज करके इन्फॉर्मेटिका ने बीडीएम कर दिया था. पहले हम लोग जब उस पे काम करते थे आज से आई डोंट नो अराउंड 6-7 years बैक, इट यूज्ड टू बी बीडी, बट अभी उसको लोग बीडीएम कहते हैं. उसको रीब्रांड कर दिया इन्फॉर्मेटिका ने. आई वर्कड ऑन इन्फॉर्मेटिका 7, 6 and 8 up till Informatica 9 I worked, but now it's Informatica 10 and 11, like that, the versions. See, this supports everything, huh? Yarn and everything it supports for batch processing, Blaze. Okay, that's too much. I think there will be no end to these things. But any other question? So Gulzar, yeah, BDE, BDM, they are same, huh? Big data management. So guys, before we end today's class, anyone, any question? I request you to practice Scoop imports and exports more. Practice Scoop export on your own. If you are able to do it, moving data from Hadoop to MySQL, try it out. And then you have tomorrow's day as well. Okay, so we will meet on Thursday, guys. Thursday and Friday, 4 to 7. So before that, you have to practice Scoop as detailed as possible. Learn more about the surveys and clear your Hive things. Okay, that is more than enough for anyone to know big data. You don't need to learn these fancy things like Flume and Kafka. So, but you should be aware about them. That's it. So there is this Apache Samza, right? So which is like another tool. Samza allows you to build stateful applications that process data in real time from multiple sources, include Apache Kafka. Okay, so means Apache Kafka works along with Apache Samza for real-time data processing. We will be using Spark for this. So Apache Samza can be a competitor to Spark, but we will be using Spark, which is far better. A distributed stream processing, streaming system, right? Real-time processing, streaming processing system. So ये Spark की तरह ही है, but Spark और इसमें कुछ difference है. Okay. Apache Samza is also there, but we will be working on Spark. So guys, I'll just summarize.
before I end today's class. We know Hadoop have two components. One is HDFS, which is storage. One is MapReduce, which is processing. MapReduce को और efficient बनाया गया yarn के through, where MapReduce 2.0 came in picture. This is the entire system. But along with it, now we need to learn Linux, which we did Linux, because everything is a Linux system here. Then SQL, which is another important thing. So we learned about HQL, Hive Query Language. And in that we learned about internal table, external table. We learned about the surveys, partitioning, bucketing. We did partitioning, not bucketing. But yeah, these are the things. Finally, we learned about scoop, which is the way to bring in the data, the batch data. Okay, इसकी full form होती है SQL to Hadoop. Scoop की जगह हम और कौन से टूल यूज कर सकते हैं? वो है ETL टूल्स, Informatica, Talent, Pentaho, राइट? अगर रियल टाइम डेटा है उसके लिए हमारे पास फ्लूम है, काफका है, और भी टूल्स हैं, सामजा वगैरह. So this is the crux of everything. and चाहे आप Hive चलाओ, चाहे आप Scoop चलाओ, everything is running Java. Everything is getting converted into Java MapReduce code. Okay. But now, from the next class, we will try to get rid of MapReduce Java. We saw some MapReduce Java code also, where we create a driver class, a mapper class, and a reducer class, right? But now we will try to get rid of this MapReduce world, and in the next class, we will start Spark. Okay. So we will do Spark. Spark is built using Scala programming language. It supports Java also. It supports Python also. So we will use Python. Okay, Karan? You don't need to learn new languages like Java or Scala. So I will be teaching you using Python. So guys, next class, we will start with the most important topic, which is Spark. Okay. So your majority of the things are done here on the MapReduce side. So next class is Spark. Any questions before we end the class? Any doubt, any concern? Yes, Nishta, tell me. What if later on we need to practice, we have to practice? So will you be available for doubt solving? ना अभी तो आपका Like बहुत लंबा 1 महीने का कोर्स चलेगा ना. अभी तो मैं 1 महीने तक तो अवेलेबल ही हूँ. अभी तो Hadoop बहुत लंबा जाएगा. Sir, yes, but after that, agar while practicing, if we find a problem, if we are stuck somewhere during self-study, so will you be available? That depends. Means definitely I'm available on WhatsApp. Okay, you can send me your queries and I will be responding. I call back also, but it should not be frequent, right? I call back when I have time. Okay. Okay. But on WhatsApp, you can reach out to me anytime, and looking at the priority of the issue, I'll call back. So the crux of the answer is I am available. Okay, even after class is over, I am available for all my students. So you don't need to think before even pinging. Okay. Okay, guys. So in the next class, we will start Spark, and there is a Spark SQL. So we will now, instead of Hive SQL, we will do Spark SQL in the next class. Okay, so thanks a lot for your time. Please practice your SQL and the analytical queries like rank, row number and all, which we will do in the Spark SQL world also. So please read about these things. और अगर स्कूप में किसी को कोई डाउट रहेगा तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर कर दूंगा. Okay guys, thank you. Thanks a lot. You can reach out to me on WhatsApp if you face any issues. I will help you. Okay, thank you.